Hello everyone, how are you all doing? Is my voice audible? क्या मेरी बात सुनाई दे रही है? I'm just performing a mic check. Thank you all for joining today's session. We're going to begin shortly. Uh, Let me just see how many people can join in. Let's just wait for 2 or 3 more minutes. So, yesterday, when we conducted this session on nerve muscle physiology, we discussed about nerves and we discussed about the neuromuscular junction, right? And we even had a small discussion on synapses. So आज जो हमारा जो basic topic है that is regarding muscle. So we'll be studying today muscle and its properties, as well as we'll be finishing up what we lived for in synapses. That was the properties of synapses. In case of nerve muscle physiology, you have to study properties of nerve fibers, you have to study properties of an action potential, you have to study the properties of a synapse. So these are the three different headings for especially for first year students, right? So let's just see. We're going to begin shortly. And regarding the schedule, we've already put it out on our Instagram channel. What shall be the schedule? आज के लिए it is nerve muscle physiology. ठीक है? And for the rest of the session and how we're going to conduct it, you can find it on our Instagram channel. And it would be very बहुत ज़्यादा benefit इस sessions का यही रहेगा when we come prepared with that amount of topic, right? अभी भी I'm also learning. That is why I also prepare the topic beforehand and read whatever is necessary from the books, jot it all down and prepare the slides. अगर कोई handwritten diagrams है तो उसके accordingly we are going to proceed. ठीक है? So let me just wait for 2 more minutes and we'll be beginning very shortly. आज का session it will be a little bit less as compared to the yesterday's session. तो आज हमारे पास ज़्यादा नहीं है. I realize that it's a Sunday. Everyone has to enjoy, and that is the reason why all of these lives are getting they're getting saved automatically. Okay, so we don't need to worry about all of that. And if you find the live boring or you find me boring at 1x, you can watch it gladly at 1.5x at your own leisure. ऐसा नहीं है कि 10 to 11 ही we have to do all of this. I realize हर एक के time constraints different है. And I just want to see how can we improve for this live session. I recently got a complaint कि पहले mic की थोड़ी problem थी, but I think आज mic and even the previous session the mic you must be hearing some difference. And अगर कोई और problem आती है, the problem is the app that I'm streaming from, that is Streamlabs, जिसके through ये screen recording वगैरह. I'm a novice at technology. जिसके थ्रू ये रिकॉर्डिंग सेशन जाते हैं. इट्स अ थर्ड पार्टी ऐप, नॉट द एक्चुअल यूट्यूब स्टूडियो ऐप. तो समटाइम्स सम वीडियो, कुछ कुछ पोर्शंस ऑफ द वीडियो गेट कट, राइट? एंड देयर वेरी बहुत स्मॉल स्टफ कट होता है व्हेन आई सी द फाइनल कट. तो आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट, बट यू कैन फाइंड द पीडीएफ हैंडआउट्स टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डल जाएंगे. एंड इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन दैट वी हैव प्लान, वी आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है? एंड so abhi for this week of April, that is the second week of April, we are going to finish up physiology. Uske baad ka session we're going to share it with you very soon as well. Okay, let's just wait for 1 more minute. We're going to begin shortly. I thank you all for your patience. अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है बीच में, you can gladly ask. I think we should begin now. If anyone has to join in, they can join in at a later time. So let's just begin. So today we're going to discuss about muscle physiology per se. So let me just remind you what is a muscle, what is a fascicle, what is a muscle fiber, and what is a myofibril. Okay, structural organization क्या है muscle का. So muscle is a bundle. It's a muscle क्या है basically. It contains different types of muscle cells. Okay, बहुत सारे हैं उसमें, बहुत सारे fascicles आते हैं. तो muscle is made up of fascicles. ठीक है? It's made up of different fascicles. And often
जो muscle है, it is covered by a layer that is known as the epimysium. Just like you remember, the nerve is covered by a layer known as the epineurium. This is covered by epimysium. Then we move on to a fascicle. What is a fascicle? Fascicle is a portion of the muscle. Hundreds से thousands से लेके fascicles एक muscle को बनाते हैं. So what is a fascicle then? A fascicle एक discrete bundle है of muscle cells. So you can see here, बहुत सारे इसमें muscle cells हैं and they're arranged in a fascicle. Okay, so they're all part of one fascicle. And what is this thing? This is a single muscle cell that we say. ठीक है, एक muscle cell या फिर हम एक muscle fiber भी कह सकते हैं उसे. ठीक है, so that is a fascicle. What is it covered by? It is covered by a perimysium. ठीक है, moving further, then we have a muscle fiber, also known as a muscle cell. कैसे होते हैं muscle cell? They are multinucleated. ठीक है, so you're going to find a बड़ा सा muscle cell. It's going to have different nuclei, different intervals. और ये muscle cell या muscle fiber ये किस चीजों से बना है? It is made up of a myofibril. ठीक है, and what is the muscle fiber or a muscle cell covered by? It is covered by endomysium. So we are proceeding like नीचे की तरफ architecturally, right? Muscle है, muscle is composed of fascicles. Fascicles किस चीज से बने हैं? Muscle fibers से बने हैं. ठीक है, a muscle is covered by an epimysium, a fascicle is covered by a perimysium, and a muscle fiber is covered by an endomysium, just like the nerve, right? Later on, we move on to a myofibril, also short for a fibril. So what is this, a myofibril? ये contractile elements हैं and they're made up of sarcomeres. So you have different sarcomeres, सारे के सारे arranged हैं. So that is a myofibril. Okay. अब इस myofibril के एक segment को which we are going to study later on is a sarcomere. Myofibril के एक segment को हमने कह दिया sarcomere. What is the myofibril made up of? Obviously, it is made up of thick and thin filaments. What is the sarcomere made up of? Sarcomere is also made up of thick and thin filaments. Okay, so it's made up of myofilaments, which are basically contractile proteins. As you all know, sarcomere functional unit of the muscle, and basically sarcomere क्या distance है? It is the distance between the two Z lines, right? दो Z lines के बीच में difference को हम sarcomere कहते हैं. ठीक है? Now later on, now we move on to a myofilament. तो दो टाइप के myofilament है हमारे पास. We have a thick filament or we can have thin filaments. Thick filament हमारा myosin है and the thin filament that we have are actin. ठीक है, actin is basically, there is something known as G-actin. एक single molecule of actin को हम G-actin कहते हैं. That's a globular actin. और ये जब सबके सब ये chains में arranged हो जाते हैं in the form of a helix, then we call it as an F-actin. That is a filamentous actin. ठीक है, तो thick and thin filaments की बात हो गई and we have discussed the structural organization of a muscle. So let's just एक और diagram है यहाँ पे. Let's just see skeletal muscle. What is it composed of? It is composed of fascicles. We have studied. ठीक है, fascicles is composed of what? It is composed of different muscle fibers, also known as different muscle cells. ठीक है, ये सारे के सारे muscle fibers या muscle cells में क्या है? It has sarcolemma. What is the sarcolemma? It is the outer covering of the muscle fiber. Sarcolemma कहते हैं उसे. It has multiple nuclei and it has the sarcoplasm, that is the cytoplasm of the muscle. ठीक है, just remember, अभी we are going to discuss it थोड़ी देर में. The sarcolemma has invaginations. मतलब अगर ये sarcolemma है, it is not like straight like this. It has invaginations going deep within the muscle. These invaginations are known as transverse tubules, also known as T tubules for short. ठीक है, transverse tubules are very important for the when we are going to talk about the electrochemical or the electromechanical coupling which happens in the skeletal muscle. ठीक है, this is what is called as a T tubule. ठीक है, अभी इसे यहीं पे रखते हैं. The sarcoplasm जो है, it is made up of sarcoplasmic reticulum. ठीक है, sarcoplasmic reticulum is very well developed in case of a skeletal muscle. It is poorly developed in case of a cardiac muscle, right? उसके बाद what do we have? We have the myofibrils. We have already studied. And what is the myofibril composed of? Thick and thin filaments as well as some accessory proteins as well. What are those? For example, we have some protein which is known as troponin. We have tropomyosin. We have a very important protein which is titin. ठीक है, नाम में है Titan. ठीक है, so Titan was a Greek god, right? So Titan was मतलब बहुत बड़ा. It is very titanic. Why is it named as Titan? Because it's the one protein which has the largest molecular weight known. I think it's about 3 lakh kilodaltons. तो सबसे ज़्यादा molecular weight किसका है? Titan का है. MCQ. ठीक है, so all of them are organized in a sarcomere. That's the functional unit of the muscle. Let's move forward. So this is the basic diagram. I want you to watch very carefully. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज बैंड्स. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी एक एक्चुअल बैंड कैसे दिखता है मसल का. मसल आर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स. इट कुड बी स्ट्राइटेड और इट कुड बी नॉन स्ट्राइटेड. सही है, स्ट्राइशंस मतलब दीज आर स्ट्राइशंस. तो स्ट्राइटेड मसल की एग्जांपल्स आर हमारा कार्डियक मसल्स एंड हमारा स्केलेटल मसल्स. दे आर स्ट्राइटेड मसल्स. वेयर आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स आर हमारे स्मूथ मसल सेल्स. ठीक है, उनमें स्ट्राइशंस आर नॉट देयर, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी. तो ये स्ट्राइशंस क्या है?
you have alternating zones. Okay, ये जोन को जहाँ पे लाइट जो है इट इज एबल टू गो वेरी वेल, इस जोन को वी कॉल इट द आइसोट्रोपिक जोन और द आइसोट्रोपिक बैंड. ठीक है, जो जोन ऐसा है जो कि लाइट को डिफरेंट डिफरेंट रेयरफैक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज अनाइसोट्रोपिक जोन विच वी स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, आइसोट्रोपिक एंड अनाइसोट्रोपिक. ठीक है, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू. All right. So this is the I band. This is an A band. This is an I band. This is an A band. ऐसे ऐसे alternate कर रहे हैं. Very fine. ठीक है. Just remember, I band के बीच में there is something known as the Z disk. ठीक है. There is something known as the Z disk. And what about the A band and the H band? We are going to discuss shortly. ठीक है. Just remember one more thing. एक जो thick filament है, it is surrounded by 6 thin filaments. As you can see, एक thick filament is surrounded by 6 thin filaments, whereas one thin filament is surrounded by 3 thick filaments. So जो ratio है, it comes out to be 2:1 ratio. ठीक है, it's very important thing as well. ठीक है, 2:1 ratio यहाँ पे है. Right. So this is the main thing that we are going to study right now. ठीक है. So the I band, that is the isotropic band, मतलब this is the region which is going to reflect light uniformly under a polarizing microscope, जो हम देख चुके हैं. I band है. ऐसे ही हमारा अनाइसोट्रोपिक बैंड है जिसमें कोई ऐसा पोर्शन है विच इज गोइंग टू स्कैटर लाइट डिफरेंटली और कोई ऐसा पोर्शन है विच इज गोइंग टू स्कैटर लाइट अदर वे अराउंड. ठीक है, सो इट इज अनाइसोट्रोपिक, नॉट यूनिफॉर्म. What about the Z disk? Z stands for Zwischen. Zwischen is a German word, and this is between. What is it between with? So Z disk is situated between the I band. In the center of the I band, there is a Z disk. Okay. What about the H band? So as you can see, A band के अंदर एक band है, which is the H band. As you can see, उसमें there is only the thick portion. That is the thick filament. That is myosin. सिर्फ वहाँ पे वो present है. As you can see, A band में it has both thick filaments as well as thin filaments. But the H band is that portion of the A band जहाँ पे सिर्फ thick filaments हैं. That is only myosin is there. ठीक है? So what does H stand for then? H stands for the German word heller. Heller means light. ठीक है? So it's going to appear more bright as compared to the other portions of the anisotropic band, that is the A band. ठीक है? H band के अंदर there is an M line. M for the German word middle, that is in the middle. So we have discussed बहुत सारे German words यहाँ पे. तो isotropic and isotropic. Anisotropic में there is an H band. H band stands for Heller. ठीक है? Z disk कहाँ है? It is in the I band. ठीक है? Just in the center of the I band, the Z disk is there. That stands for Zwischen. Zwischen means between. The H band is Heller. The M band, that is the M line, that is middle. Middle means between. So middle is in the middle. That is H band के जो बीच में है, that is the M line. ठीक है? So this is the basic structure of a sarcomere. So what does the sarcomere stand for? Sarcomere is the distance between two Z disks. खत्म. दो Z डिस्क में बहुत सारे पोर्शंस आएंगे. I band भी आएगा, A band भी आएगा, H band भी आएगा, सब कुछ आएगा. ठीक है? So that is the main structure. ठीक है? So let's move next. We were discussing about something known as titin. ठीक है? So titin is the largest known protein. ठीक है? It has a molecular mass of about 3 lakh kilodaltons. And what does it do? As you can see, titin यहाँ पे just नीचे where it is highlighted. So titin is attaching the Z disk to the M line. Can you see that? Z disk को M line को जोड़ना is the role of titin. And what are we going to do about this titin? Titin provides the necessary elasticity. Okay. Whenever we contract a muscle or whenever a muscle is lengthened, जो वापस उसे restore करेगा to its normal conformational shape, that is known as the elastic components of the muscle. Different होते हैं. So just remember, titin is one of those elastic components. ठीक है? It provides elasticity and stabilizes the myosin. Okay, so that is the job of titin. Next, we are going to talk about the actin molecules now. As we saw, actin molecules जो ऊपर bead-like structures हैं, they are actin, they are globular actin. जब ये सब के सब इकट्ठे आ जाएंगे, that's known as a filamentous actin in the form of a helix. So that is what we call as an actin helix. As you can see, in actin molecules के ऊपर एक binding site है. That binding site is actually for myosin. तो myosin जो है, it's going to form a cross bridge with actin. ठीक है? Next we move on to what is it? Troponin. As you can see, troponin जो molecule है, it is composed of 3 subunits. Very important. ठीक है? There is a T subunit which is a tropomyosin binding site. There's an I subunit, that is the actin binding site, and there is a C subunit which is a calcium binding site. So क्या होता है? Let me just tell you briefly. The thing is, actin
can participate and form a cross bridge with myosin. Actin के पास अपने myosin के binding sites हैं, बिल्कुल. But the problem is tropomyosin. Tropomyosin, what does it do? It binds to the myosin binding sites present on actin and prevents the interaction of myosin with actin. ठीक है? And यहाँ पे जो hero है, that is the troponin. Okay? Troponin जो है, when calcium comes, it's going to bind to the calcium binding site of troponin. ठीक है? And troponin क्या करेगा? Because troponin is also bound to tropomyosin and tropomyosin was bound to actin. तो troponin tropomyosin को खींच के it will localize it inwards so that the interaction between actin and myosin can be facilitated. So that's the main job of troponin. So you just remember T, I, and C components. ठीक है? C is for the calcium binding subunit, T is for the tropomyosin binding site, and I is for the actin binding site. And we saw tropomyosin as well. Okay? It's also an helical structure just like actin, and it's preventing the interaction of actin with your myosin by occupying the myosin binding sites present on actin. Okay. So what about the myosin then? Myosin की दो chains हैं. We have a heavy chain and we have एक myosin is composed of two chains. Actually 4 chains, 2 heavy chains and 2 light chains. Okay. 2 heavy chains and 4 light chains. Her heavy chain is associated with 2 light chains. Okay. So we have 2 heavy chains. ये ऐसे linked up हैं. So there's a tail region, there's a hinges, and जो उसका head है myosin का, it contains the actin binding site. बिल्कुल सही बात है. What else does it contain? It contains a myosin ATPase. We know ATP is required for muscle contraction and muscle relaxation. ठीक है? तो यहाँ पे myosin ATPase activity is very important. ठीक है? So that is the main thing that's happening. So this is the structure of myosin as well. Now we move on to the different functions of each of these proteins. As you all know, myosin, it will generate the force during muscle contraction. हमें पता है actin वो filament है जिसके ऊपर myosin is going to contract. We know that. Tropomyosin एक regulatory protein है which is going to prevent the interaction of actin with myosin. Troponin भी एक regulatory protein है which is initially it has different sites. It has a T site, it has a C site, है ना? तो and an I site. So I say it is bound to actin, T say it is tropomyosin, and C say it is calcium. Whenever calcium comes in, it is going to खींच लेगा वो tropomyosin inward so that the actin and myosin can interact freely. And we already talked about titin as well. So titin जो है, it connects the Z disc to the M lines and provides the necessary elasticity and the structural stability to myosin. ठीक है? Next, very important thing. It is relevant in pathology. It is relevant in your CNS medicine, right? So that is Duchenne's muscular dystrophy and Becker's muscular dystrophy. Okay. So what are these things? So what is happening in these are X-linked recessive disorders. इनमें एक gene है that is known as dystrophin. ठीक है? This dystrophin gene either is absent in case of Duchenne's or it is reduced in case of Becker's. ठीक है? Altered है, reduced है in case of Becker's, Duchenne's, and इसके accordingly we say muscular dystrophies are different kinds की. Just remember what is dystrophin doing. There is a sarcolemmal protein known as dystroglycan. ठीक है? It's a complex, dystroglycan and sarcoglycan. This dystroglycan and sarcoglycan is a sarcolemmal protein. Done. Dystrophin is the protein which is going to connect that beta dystroglycan via desmin to the myofibrils. सही बात है? तो क्या कर रहे हैं बेसिकली मायोफाइब्रिल्स को स्टेबलाइज नहीं कर रहे टू द sarcolemmal membrane. Very true. तो क्या होएगा ऐसा whenever this is disrupted, what's going to go wrong? ठीक है? So let me just revise some pathology with you as well. So this is the complex that we are going to talk about. ठीक है? We can see dystroglycans, we can see sarcoglycans, and we can see the dystrophin gene. And dystrophin क्या कर रहा है? Sarcolemma को bind कर रहा है to the myofibrils and providing the mechanical support to the muscle. Whenever that dystrophin is gone, as you can see, dystrophin चला गया है, तो mechanical support is going to be gone. There's going to be a break in the sarcolemma. अब जो plasma membrane अगर वो disrupt हो गई, तो plasma membrane पहले कैसी थी? Semi permeable. It was regulating its own amount of ions वगैरह. अगर ये ऐसा नहीं होगा, what's going to happen? Calcium is going to enter inside the cell freely. ठीक है? This increased amount of calcium is going to open a pore in the mitochondria, which is known as the mitochondria permeability transition pore, MPTP. ठीक है? इस pore के through cytochrome C is released, and this triggers what we know known as the intrinsic pathway of apoptosis that we read it in pathology. So as you can see, dystrophin के कारण ऐसा क्या हुआ है that all of these muscles are dying because it was providing the sarcolemma with the necessary support. And when that is gone, calcium is going to mediate the intrinsic pathway of apoptosis. Cell is to undergo cell death. So this is what is happening. ठीक है? So
this was all about the different myofibrils. Now let's discuss something about the sarcoplasmic reticulum now. So as you can see, जो sarcoplasmic reticulum है और जो sarcolemmal membrane as we see, sarcolemmal membrane के अंदर एक invagination की तरह अंदर की तरफ क्या है, this is known as a transverse tubule. ठीक है, this transverse tubule जो अंदर की तरफ क्या है, we're going to study that very shortly. और उसी के साथ में you have this something known as a terminal cistern. ठीक है, sarcoplasmic reticulum का एक portion है which is known as the terminal cistern. This terminal cistern क्या है, sarcoplasmic reticulum का part है, so it's going to contain calcium. And T tubules क्या है, it has different amount of receptors present over it, and we're going to discuss that shortly. But अभी MCQ के लिए it's important, we know something known as a triad. What is this triad? Triad का मतलब ये है कि दो terminal cistern and एक T tubule को collectively call it as a triad. ठीक है, very important. ठीक है. Now what is going to happen actually? So right, so what's going to happen actually is कि whenever an action potential is generated, ठीक है, मतलब neuromuscular junction हमने कल पढ़ा, acetylcholine gets released है ना, and action potential gets generated. What happens actually? तो nicotinic acetylcholine receptors के बारे में हमने कल पढ़ा था, and how it functions as a channel, right? It's an inotropic receptor जिसके through sodium can come inside and depolarize the membrane. So the muscle membrane is depolarized. What's going to happen? It's going to activate a channel known as DHPR. What does DHPR stand for? Dihydropyridine receptor. Okay, so this DHPR is linked with another receptor which is present on the sarcoplasmic reticulum. Okay, as you can see, एक coil सी बनी हुई है between DHPR and ryanodine receptor. Okay, so ये ryanodine receptor and DHPR, they're going to function together. Whenever the DHPR gets stimulated, just you can imagine it like that कि वो coil जो है उसे वो अपनी तरफ pull करेगा and the ryanodine receptor is freed, right? So इसके through what's going to happen is calcium is going to exit the sarcoplasmic reticulum through the ryanodine receptor which was earlier blocked. DHPR के एक्टिवेशन के कारण उसने लाइक शैंपेन बॉटल में से जैसे हम कॉक खोलते हैं, उसने बेसिकली वो कॉक ओपन कर दिया so that all of that fizz can go out. That is why the calcium channels, and इसके through calcium is going to enter inside the cytoplasm and mediate muscle contraction just like we know. ठीक है, and after the muscle contraction is done, we have another transporter which is known as the SERCA, that is sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPase. तो calcium ATPase का मतलब उल्टा ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब कैल्शियम इज इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेफिनेटली वो ज्यादा है वहां पे, एंड साइटोप्लाज्म में तब भी बहुत कम है, तो ऑपोजिट एक्शन के लिए इट वुड नीड एटीपी का एक्सचेंज, सो इट्स अ कैल्शियम एटीपी सर्का, इट्स गोइंग टू मीडिएट मसल रिलैक्सेशन वंस द एक्शन पोटेंशियल इज डाइड डाउन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि whenever the calcium comes inside, it binds to the troponin C subunit जो है हमारी जो C site है over the troponin, and calcium के इंटरेक्शन के कारण troponin pulls the tropomyosin inside so that it releases the sites for myosin which are present on actin, and इसके through we form a cross bridge formation. ठीक है, and इसके accordingly we have muscle contraction which occurs. ठीक है, a very important diagram, we need to follow this up very carefully. Okay, just one more I would briefly pause for 1 minute please. ठीक है, thank you so much for waiting. All right, so abhi we are going to discuss the cross bridge formation now. ठीक है, so what's going to happen is, let's just assume ये हमारा myosin है, and we know myosin के ऊपर दो sites हैं, एक हमारा ATP और ADP binding site है, and it has the binding site for actin and a calcium and a myosin ATPase हमें जो पता है, ATPase which is going to cleave the ATP into ADP. तो अभी what's going to happen is, the first thing is the ATP is split by the myosin ATPase, and ADP and phosphate जो है it's going to remain attached to the myosin. ठीक है, so now what's going to happen is अभी वो resting stage में है, मतलब ADP and phosphate are bound to the myosin. ठीक है, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये previous contraction का ADP and phosphate अभी generate हुआ है. ठीक है, तो अभी ADP and phosphate are bound to the this myosin. ठीक है, so now what's going to happen is the calcium is going to get released. ठीक है, अब calcium आया and calcium ने what it has done, we have already known कि how does it work.
it binds to troponin and वो tropomyosin को inwards खींच लेगा, so that we have the actin, we have the myosin binding site which are present on actin, तो वो facilitate हो जाएगा. तो troponin I is bound to actin and tropomyosin, and whenever the calcium increases, it's bind to troponin C, which weakens the troponin in interaction with actin, और वो अंदर की तरफ चला जाएगा. We know that. And अभी क्या होएगा? It is going to bind and it's going to form a cross bridge now. So what have we formed now? We have a cross bridge. Remember, अभी इसमें energy stored है. ATP को हमने before even contracting we have already converted into ADP and phosphate, and जो सारी की सारी energy stored है वो यहाँ पे stored है. ठीक है? It's like a cock. अभी वो पूरा का पूरा wound up हो गया. ठीक है? Now what's going to happen? Next thing, अब power stroke लगेगा. So now this thing, just remember, अगर ये हमारा when we are talking about myosin is, ये हमारे सारे myosin molecules ऐसे arranged हैं. ठीक है? They are arranged like this, okay? And यहाँ पे हमारा actin present है, तो जो power stroke लगेगा it's going to be inwards. Just remember that, ठीक है? तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं अभी. तो power stroke लगेगा यहाँ पे. So the power stroke is going to between तो यहाँ पे whenever the power stroke is done, जब power stroke लग चुका है, contraction हो चुका है, the ATP and the phosphates are released. Okay? And now whenever fresh ATP, a very important stuff now. Whenever you talk about rigor mortis occurs because हमने ATP fresh generate नहीं कर पाए हैं, right? वो ऐसा क्यों हुआ है? Because ये जो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है ना, इसको ब्रेक करने के लिए भी वी ऑल्सो नीड ATP. ठीक है? एंड देन व्हेन द ATP binds, it's going to get cleaved into ADP and phosphate, और वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, and we're going to continue this cycle again and again for the amount of muscle contraction. ठीक है? So अगर there is no ATP, तो ये क्रॉस ब्रिज formation is going to stay, and that is what we call as a rigor. ठीक है? And whenever ATP is there, fresh ATP is available, it again binds to the myosin, ATP binding site पे, gets converted into ADP and phosphate. This ADP and phosphate is again bound to myosin, and then whenever calcium comes inside, it's going to interact with actin, and then it's going to generate the power stroke again. So this is what is happening. ठीक है? Let me just show you a small GIF for it. So this is the thing that's happening actually. So this is the GIF that I took out from the internet, and as you can see, these are the binding sites for myosin, which are present on actin, and this is the power stroke that is being generated towards the inside. ठीक है? So as you can see, calcium जैसे bind किया, वो internalize कर रहा है tropomyosin complex को. अब tropomyosin complex अगर अंदर की तरफ internalize हो गया, the myosin and actin can participate in their formation of a cross bridge. और ये जो power stroke लग रहा है, it is going to occur inwards. ठीक है? That is towards the M line, right? M line की तरफ ये middle जो which we studied, H band के बीच वाले पोर्शन को, हेलर बैंड के बीच वाले पोर्शन को call it as the M line. तो ये अंदर की तरफ ऐसे पावर स्ट्रोक लग रहा है. ठीक है? Let's resume. So this is what is happening. So now let's just एक बार जल्दी से somatic motor neuron, it releases acetylcholine. Done. Acetylcholine gets released. हमने वो बहुत डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया about the kiss and run discharge. We discussed about the small clear vesicles में stored होगा acetylcholine. We even discussed about the active zones जो हमारे specialized amount of calcium channels है जिसके through exocytosis होगा, and acetylcholine is released into the synaptic cleft. It's a chemical synapse, neuromuscular junction. अब क्या होएगा? यहाँ पे हमारे जो receptors हैं क्या? Nicotinic acetylcholine receptor. ठीक है? This nicotinic acetylcholine receptor is an ionotropic receptor. इसके through sodium is going to come inside, and membrane is going to get depolarization और action potential generate हो रहा है. Now क्या होगा? This DHP receptors gets activated. Whenever the DHP receptor gets activated, ये champagne की cork की तरह, it's going to pull the cork out of ryanodine receptor, और जो सारा का सारा calcium stored है in the sarcoplasmic reticulum, that's going to leak outside. ठीक है? So this is what is happening. ठीक है? This is excitation contraction coupling. Now ये DHPR ने ओपन कर दिया ryanodine receptor को, the calcium binds to troponin allowing actin myosin binding, and the myosin head executes the power stroke. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वो कैसे करता है वो. ठीक है? And whenever the muscle contraction, अब relaxation phase में हम, तो ये सारा का सारा जो calcium which is released, it is gone back into the sarcoplasmic reticulum via this channel known as sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPase with the help of ATP. ठीक है? Right? That's easy. Very favorite question. मतलब I must say this is the portion of the video that you should pay much attention to. बहुत बार ये आता है, and these are very confusing options. What happens? So let's just see. Edge zone क्या है portion? Edge zone is that portion which only contains a thick filament. सही है? हमें सिर्फ myosin दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है? Anisometropic zone क्या है? Anisometropic zone वो band है anisometropic जहाँ पे दोनों thick as well as thin both are present. सही बात है.
व्हाट अबाउट द आई बैंड? ठीक है, आई बैंड हाफ यहाँ पे है जहाँ पे दिस आइसोट्रोपिक, जिसमें सिर्फ थिन है यहाँ पे, और आई यहाँ पे होगा, तो दैट इज बाय हाफ आई बैंड. हाफ आई बैंड वी कॉल इट एज अ between the two disc, that is between the two z disc, हमने इसे क्या कह दिया, sarcomere कह दिया. तो this is the sarcomere, this is the H zone which only contains thick filaments, this is the A band which contains thick as well as thin filaments, this is half I band, this is half I band, all of this is known as the sarcomere. ठीक है. Now during contraction if you see what is happening, let's एक एक करके जाएंगे. पहली बात तो बहुत ऑब्वियस है, जो ये हमारा sarcomere है वो शॉर्टन हो गया. ठीक है, तो सार्कोमियर का लेंथ तो पक्का डिक्रीज हो गया. ठीक है, उसी के कारण तो मसल कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होगा. व्हाट अबाउट द ए बैंड? इफ यू सी, इवन इफ जो हमारा एक्टिन है, इवन इफ इट मूव्स इनवर्ड्स, जो ओवरलैप वाला पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा. सो द ए बैंड, जो हमारा ओवरलैप वाला पोर्शन था बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट, दैट्स गोइंग टू रिमेन नॉर्मली, वो उतना ही रहेगा. सो द ए बैंड, जो विड्थ ऑफ द ए बैंड जो है वो सेम रहेगी. एज यू कैन सी, ये ए बैंड ये है हमारा, ये बैंड ये है हमारा, इट्स स्टेइंग एग्जैक्टली द सेम. So what happens to the H band then? H band disappear हो गया. देखो, H band is not there. What was H band? H band was that portion of the this whole complex जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ thick filaments present थे. That was myosin present था. Because actin has moved inside and it has made contact, fully contracted muscle में, the H band is not there. So the H band disappears, the length of the A band remains the same, the length of the sarcomere is shortened. What about the Z disc? Obviously the Z discs are closing upon themselves because the sarcomere is getting shortened. So the length, the Z lines हैं, they're also coming close together. ठीक है, so this is what is happening. So let's just see क्या क्या हो रहा है. A bands remain the same, true. What about the I bands? I bands क्या है हमारा? I bands वो portion of actin है which was free because actin has moved inside. तो जो I band है वो भी हमारा छोटा हो जाएगा. So the I band का width भी decreases. H zone disappears because all of the actin has overlapped. So there is no remaining portion of thick filaments present. And what about the length of the sarcomere? It decreases between the two Z discs. ठीक है? So confusing MCQs आते हैं. These are 3 or 5 statements that I would like you to remember हमेशा. ठीक है? Let's move now. Properties of a skeletal muscle. ठीक है? So these are different properties that we're going to study. So let's move to a simple muscle curve. What happens? तो यहाँ पे what is happening is ये हमारा action potential generate हुआ है at the neuromuscular junction. There is some portion which is known as the latent period. जिस latent period वो portion है कि action potential आ चुका है but still the muscle is not contracted. ठीक है? तो थोड़ा तो time देना पड़ेगा ना muscle को. So it lasts for about 0.01 seconds. ठीक है? That is about 10 milliseconds. 10 milliseconds का हमारा latent period है. So it's said a few milliseconds. Fine. Then we have the contraction phase जिसमें muscle is going to contract. ठीक है? Contraction phase different muscles की different होती है. For example, fast muscle fibers की it can be different, slow muscle fibers की it can be prolonged as well. तो एक roughly ले लेते हैं तो it comes out to be about 0.04 seconds. ठीक है? 0.04 seconds हमारी आ जाएगी. That is about 40 milliseconds. Right? And what is the relaxation phase? कि muscle twitch के बाद जो हमारी relaxation phase है वो है. तो latent period है, there is a contraction phase and there is a relaxation phase. Done. Now we move on to the contractility. एक muscle fiber is going to contract. What does it depend upon? It depends upon a multiple amount of things. What is the type of muscle fiber that is getting recruited or that is getting contracted, which we're going to study. Different types. 3 type के muscle fibers हैं, अभी हम पढ़ेंगे. The number of motor units which are recruited, that's one factor. कितना frequency या फिर summation of the stimulus है, that is one factor. And the initial length of the muscle fiber, which we daringly call as the Frank-Starling law of the heart भी कह सकते हैं, but यहाँ पे इस case में we're going to say Frank-Starling law effect. ठीक है? That is only for the skeletal muscle and obviously temperature as well. ठीक है? So there are 3 types of muscle fibers. So let's just see, there is type 1, there is type 2 which is further divided into type 2A and type 2B. ठीक है? Type 1 क्या है? It is slow oxidative. ठीक है? Slow muscle fibers हैं, इसका contraction phase ज़्यादा time के लिए last करेगा. ठीक है? आराम से. Okay? Slow muscle fibers. And what are they? They're oxidative. So they're going to depend upon oxidative phosphorylation for their ATP source. Done. Then we have type 2. Type 2 actually हमारे fast हैं. So type 1 अगर slow हैं, these are हमारे fast muscle fibers. They are further divided into 2 types. We can have fast oxidative glycolytic (FOG) or we can have fast glycolytic. ठीक है? 3 type के muscle fibers we are going to study in contrast in this table. ठीक है? So what about the color? जो हमारे ऑक्सीडेटिव वाले हैं, दे कंटेन लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो जस्ट रिमेंबर, जैसे हम डायग्रामेटिकली क्या बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, रेड बनाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अमाउंट्स are going to be highest in these ones which are performing oxidative phosphorylation, and that is the reason why the color of type 1 and type 2A is red, because they contain lot of mitochondria. Done.
व्हाट अबाउट द मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी? मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी देन दैट मीन्स हम ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मसल को फॉर अ वेरी शॉर्टर अमाउंट्स ऑफ टाइम. So ATPase activity obviously will be higher in those muscles which are performing fast actions. So this is going to be fast in case of fast wale, fast oxidative glycolytic as well as fast glycolytic. What about the circa? Because circa भी हमें चाहिए, we need muscle contraction and relaxation. तभी हम एक फेज कहेंगे ना उसे, एक सिंपल मसल कर्व को, तो वो भी किस में ज्यादा होगा? फास्ट वाले फाइबर्स में होगा. तो कैल्शियम पंपिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो हाई इन टाइप 2A एंड टाइप 2B फाइबर्स. डन. What about the glycolytic capacity? Glycolytic capacity हमारी इन दोनों में ज्यादा है, इसमें moderate है because it is solely oxidative. This is oxidative glycolytic, this is glycolytic only. So इनमें high है. What about the oxidative capacity? This is slowly oxidative, तो इसमें तो maximum होगी. इसमें fast oxidative glycolytic है तो थोड़ा कम होगा. And this has the least oxidative property. ठीक है, oxidative property. And muscle fibers हमने पढ़ लिए. Next we are going to study something known as the motor unit. और उस मोटर यूनिट को भी हम इसी के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर 3 टाइप के मसल फाइबर्स, फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, फास्ट ग्लाइकोलिटिक एंड देन वी हैव स्लो ऑक्सीडेटिव. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ मोटर यूनिट. व्हाट इज अ मोटर यूनिट? अ मोटर यूनिट इज कितने मसल फाइबर्स आर बीइंग सप्लाइड बाय वन मोटर न्यूरॉन. ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जो हमारे ऐसे फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल राइटिंग और फॉर एग्जांपल आई मूवमेंट्स वगैरह, दे नीड मोर प्रिसीजन. ठीक है, तो उस केस में जो मोटर यूनिट होती है, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? एक मोटर यूनिट एक मसल फाइबर को सप्लाई करेगा. सो देयर इज नो कन्वर्जेंस उस टाइम पे. ठीक है, सो मोटर यूनिट क्या है? एक मोटर न्यूरॉन कितने मसल फाइबर्स को सप्लाई कर सकते हैं, उसे हम एक मोटर यूनिट कहते हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोटर यूनिट्स. वी कैन हैव स्लो, ठीक है, वी कैन हैव फास्ट resistant to fatigue और we can have fast fatigable. इतना काफी है. And obviously slow वाले are going to be composed of your slow oxidative fibers. Fast resistant to fatigue are going to be composed of हमारा type 2A type of fibers and fast fatigable हमारे FG type, that is type 2B type of fibers. ठीक है. So right, a very important principle एक और आ गया है, that is the Henneman size principle. तो क्या होता है? For example, let me just see. एक चीज लेट मी जस्ट टेल यू. हमने 3 मसल यूनिट्स पढ़ी. हमने कहा स्लो, हमने कहा फास्ट रेजिस्टेंट टू फटीग और हमने कहा फास्ट फटीगेबल. सही है. दैट इज एस, एफ आर एंड एफ एफ. वेन एवर वी आर स्टैंडिंग, दैट इज समथिंग दैट इज द लीस्ट दैट वी कैन डू. ठीक है, खड़े होना है तो कुछ बड़ी बात नहीं है. तो उस टाइम पे ओनली द एस मसल यूनिट्स आर गेटिंग रिक्रूटेड. एज वी नीड मोर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल नाउ वी स्टार्ट टू वॉक नाउ, तो वॉकिंग इज इट फटीगेबल फॉर अस? इट्स नॉट. बिकॉज उस टाइम पे जो मसल यूनिट्स जो हमारी रिक्रूट हो रही है, दे आर फास्ट रेजिस्टेंट टू फटीग. ठीक है. एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू जंप और रन, उस टाइम पे वी डू फील टायर्ड बिकॉज वी हैव स्पेंड सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी देयर, है ना. तो उसे हम क्या कहते हैं? बिकॉज उस टाइम पे फास्ट फटीगेबल फाइबर्स आर गेटिंग रिक्रूटेड. सो दिस इज द हेनेमन साइज प्रिंसिपल. साइज के अकॉर्डिंगली मसल यूनिट्स आर गेटिंग रिक्रूटेड फॉर द अमाउंट ऑफ एक्शन दैट यू आर डूइंग. स्टैंड कर रहे हो सिर्फ, only your S muscle units are getting recruited. Whenever you want to perform an even darer task like walking for example, आपके S वाली यूनिट्स भी रिक्रूट होंगी एंड FR दैट इज फास्ट रेजिस्टेंट टू फटीग भी रिक्रूट होने लग जाएगा. देन whenever you are running, jumping or doing some extreme activities, उस टाइम पे फास्ट फटीगेबल, उसके बाद आप मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते. दैट इज योर लिमिट एक्चुअली. ठीक है. सो दिस इज द हेनेमन साइज प्रिंसिपल. राइट. सो एक और जस्ट एन एमसीक्यू. टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक मसल की? टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी इज the reciprocal of your time of the contraction phase. For example, time of contraction phase अगर हम 40 milliseconds लेते हैं, तो अगर 40 हर्ट्ज की अगर आप किसी मसल को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाओगे पर सेकेंड, मतलब 40 एक्शन पोटेंशियल आर गोइंग, उस टाइम पे द मसल इज गोइंग टू अंडरगो टेटनी. दैट इज नोन एज द टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मसल, 1 डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फेज दैट इज दैट. ठीक है. नाउ 2-4 और टर्म्स हैं. वी हैव समथिंग नोन एज ट्रेपे. व्हाट इज दिस ट्रेपे? ट्रेपे ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक मसल ट्विच हुआ, मतलब इट अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन, देन इट अंडरगोज रिलैक्सेशन. जो नेक्स्ट एंड वी आर हैविंग सक्सेसिव मसल ट्विचेस. नाउ ट्रेपे सजेस्ट आपके जो एक का एक्शन पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है या टेंशन जितना आप जनरेट करते हो, सक्सेसिव वाली जो हमारी नेक्स्ट मसल ट्विच होएगी, इफ देर वेरी क्लोजली सराउंड, इफ देर वेरी समेटेड इन टाइम आई वुड से, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट टाइम गोज बाय. ठीक है.
तो इसे हम कहते हैं ट्रिपे पैटर्न, ऑल्सो नोन एज द स्टेप लैडर पैटर्न। एज यू कैन सी यहाँ पे, तो जैसे जैसे हमारी जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी पे हम मसल को फायर कर रहे हैं, तो हर सक्सेसिव एक्शन पोटेंशियल के बाद ज्यादा टेंशन जनरेट हो रही है। इसे हम ट्रिपे पैटर्न भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज द स्टेयरकेस इफेक्ट एज वेल। ठीक है, वी ऑल्सो सी इट इन द हार्ट एज वेल। एंड व्हाट इज टेटनाई? टेटनाई क्या है? बेसिकली हमारा जब पूरा समेशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज टेटनी। ऑन टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हाउ डू वी डू दैट। ठीक है, द फोर्थ थिंग जिसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग कि मसल कंट्रैक्शन को क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। कितना इनिशियल लेंथ? बिकॉज इवन अगर ज्यादा हमारा ओवरलैप होएगा या हमारा कम ओवरलैप होएगा, द अमाउंट ऑफ टेंशन दैट इज जनरेटेड विल बी लेस। ठीक है, तो एक रेस्टिंग लेंथ जिसे हम कहते हैं, व्हाट इज दैट रेस्टिंग लेंथ? दैट रेस्टिंग लेंथ ऑल्सो नोन एज द ऑप्टिमल रेस्टिंग लेंथ, वो पोर्शन है जहां पे हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन कैन बी जनरेटेड, बिकॉज उस टाइम पे हमारे मैक्सिमम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेस्टिंग लेंथ ऑफ दैट मसल फाइबर। यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन इज जनरेटेड। ठीक है, तो दैट इज द फ्रैंक-स्टार्लिंग लॉ ऑफ द इफेक्ट, फ्रैंक-स्टार्लिंग लॉ एज वेल, कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की जो टेंशन है, दैट इज मॉड्यूलेटेड बाय इट्स इनिशियल लेंथ। अगर वो इनिशियल लेंथ कम थी और आपने इंक्रीज करके उसे रेस्टिंग लेंथ पे ले आए हो, ऑब्वियसली योर टेंशन विल इंक्रीज, दैट यू जनरेट बाय अ मसल फाइबर। ठीक है, so here we see what are the different components of a muscle. दो तीन components हैं. There is a CC, that is a contractile component. क्या है वो? Actin and myosin. There is a PEC. What is that? Parallel elastic component. What are those? जो भी हमारा sarcolemma है, connective tissue है, titin है, different proteins के बारे में जो हमने पढ़ा, they're arranged in parallel with the muscle, isn't it? वो साथ के साथ associated है with the myofilaments. तो इसे हम PEC कहते हैं. That is parallel elastic component. Now what about the SEC? जहां पे हमारा मसल इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज योर टेंडन दैट वी वुड से, तो वो इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट मसल, दैट इज वाई वी कॉल इट एज द सीरीज इलास्टिक कॉम्पोनेंट। तो डिफरेंट है, एक कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो करेगा तो टेंशन जनरेट होएगी मसल में, एंड वेन एवर टेंशन इज जनरेटेड, ऑब्वियसली वी गोइंग द मसल ट्राइज टू गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फॉर्मेशनल शेप, that is its elasticity. What is that elasticity mediated by? By the parallel elastic component and the series elastic component. SEC क्या हमारा टेंडन है, PEC हमारा sarcolemma and different proteins हमारे. ठीक है, now this is the length tension relationship which I was showing. If you see resting length पे, the total amount of tension that we generate or the active tension that we generate is maximum. This is the whole point that I want to make. ठीक है, एक्टिव टेंशन किसके कारण है? कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट के कारण। ठीक है, एंड व्हाट इज पैसिव टेंशन? जितना ज्यादा मसल को स्ट्रेच करते हैं, फॉर एग्जांपल द मसल वांट्स टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो वो भी तो एक टेंशन जनरेट कर दी ना मसल ने, बट दैट इज ड्यू टू द इलास्टिक कंपोनेंट्स. विच इलास्टिक कंपोनेंट्स? पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स एंड योर सीक्वेंस, दैट इज योर सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट. ठीक है, तो वो हमारी पैसिव टेंशन है, एक हमारी एक्टिव टेंशन है विच इज मैक्सिमम एट द रेस्टिंग लेंथ. And what is the Frank-Starling law? That within physiological limit, the length of the muscle fiber is directly proportional to the force of contraction. अगर पहले कम थी length of the muscle fiber so that cross bridge formation overlap नहीं हो पा रहा था, now अब आपने muscle length की अगर increase कर दी है and optimum आप resting length पे उसे ले आओगे, as you can see the total tension will gradually increase. That is your Frank-Starling law, which we also see it in the heart. ठीक है, so this is what I was showing you. Right. Now the next thing that I would like to talk to you about is effect of temperature. Just remember at warm temperature, जैसे जैसे warm होएगा हमारा temperature, the force of muscle contraction will increase. Why? Because एक तो muscle की excitability is increased, और जो भी हमारे chemical processes हो रहे हैं that are involved in muscular contraction, जो भी हैं, that is opening of an iodine receptor or the circa की activity, all of these chemical processes are accelerated during increased temperature. ठीक है, so all of this is मतलब effective temperature का क्या है? जैसे जैसे warmth होएगी, obviously हमारा muscle contraction will increase. ठीक है, so that is what now the last thing that we might discuss is the energy source. ठीक है, energy source क्या muscle की? एक हमारा direct phosphorylation, मतलब direct coupling. We know creatine phosphate is stored in the muscle. तो whenever ATP को हमने restore करना है, what can we do? हम ADP को convert कर सकते हैं into ATP by converting creatine phosphate to creatine. ठीक है, तो जो इनिशियल whenever we are running a sprint, so जो इनिशियल 10 to 15 seconds में जो हमें एनर्जी चाहिए through the muscles is mediated via this direct phosphorylation pathway. ठीक है, मतलब creatine phosphate gets created to creatinine, it gives its phosphate to its ADP, converts it into ATP and we can utilize the ATP. तो इनिशियल 10 to 15 seconds में direct phosphorylation के through the muscle obtains its energy.
व्हाट अबाउट द एनारोबिक पाथवे? वेरी सिंपल, एनारोबिक मतलब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है बट फुल्ली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, तो इट इज गेटिंग स्टॉप्ड एट द लैक्टिक एसिड वाला पार्ट. एंड वी नो ग्लाइकोलिसिस का नेट प्रोडक्ट कितना होएगा, स्पेशली व्हेन इट इज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, इट्स गोइंग टू बी 2 ATP. ठीक है, सो इसमें 2 ATPs आर जनरेटेड. इसमें डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन में ओनली 1 ATP फॉर 1 क्रिएटिन फॉस्फेट. इस केस में एक ग्लूकोज से वी आर गोइंग टू जनरेट 2 ATP गेन. एंड ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें मिल रही है, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 3 minutes. ओके, दिस इज अगेन वेरी फास्ट. ऑलराइट, नाउ वेयर इज द ग्लूकोज कमिंग फ्रॉम? इट कैन कम फ्रॉम 2 sources. वी नो ग्लाइकोजन फॉस्फेट जो है इट इज स्टोर्ड इन द मसल एंड द लिवर. तो जो मसल वाला ग्लाइकोजन फॉस्फेट है, दैट कैन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, as well as we can obtain the glucose from the blood as well. Now the last pathway that through which we can acquire this energy is the aerobic pathway. Aerobic pathway में glucose को हम pyruvic acid में convert कर रहे हैं. That pyruvic acid is undergoing oxidative phosphorylation in the mitochondria and we are generating 32 ATP per glucose molecule. ठीक है, एंड ये कितना टाइम हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी? एज यू ऑल नो, मैराथन रनर्स दे कैन कीप रनिंग फॉर आवर्स, राइट? तो ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर्स. सो दैट इज द थिंग. क्रिएटिन फॉस्फेट के केस में एनर्जी सोर्स इज क्रिएटिन फॉस्फेट. इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? नो. क्रिएटिन फॉस्फेट गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू क्रिएटिन, कन्वर्टिंग ADP टू ATP. ATP यील्ड कितना? एक क्रिएटिन फॉस्फेट के लिए सिर्फ एक ATP जनरेटेड, बिल्कुल ट्रू है, एंड 10 seconds के लिए. Now anaerobic glycolysis में is glucose required? Yes, glucose is required. Oxygen required है? नहीं. Anaerobic कर रहे हो आप basically. And what you are providing, you're basically 2 आपको ATP मिल रहे हैं per glucose molecule, and up to 3 minutes you can sustain this. And oxidative aerobic pathway का तो हमने अभी पढ़ ही लिया है कि different चीजों से we can perform gluconeogenesis, जिसके कारण we can restore glucose, or via glycogenolysis we can generate this glucose and funnel it into the mitochondria so that we can generate 32 ATP per 1 glucose molecule. Okay. So this is what is seen कि short duration high intensity exercises में कैसे कैसे during the course of this exercise, initial 10 seconds में what do we utilize as the source of energy, and later on we move on to your glycolytic pathway and ultimately into the aerobic cellular pathway. ठीक है, so you can go through this as well. Now after we are done with this activity, muscle ने perform किया, marathon आप भाग गए, don't you huff and puff at the end of that? So why is that happening? जितना आपको ऑक्सीजन डिमांड था, दैट ओवरशूट्स योर ऑक्सीजन, जो आपको ऑक्सीजन डिमांड है, दैट इज ओवरशूटिंग योर ऑक्सीजन विच इज फ्रैंकली अवेलेबल फॉर यू. ठीक है, एज यू कैन सी इसमें जो ग्रीन, इसमें जो ऊपर वाला जो कर्व है, दैट इज ऑक्सीजन डिमांड, एंड द रेड डॉटेड लाइन इज योर ऑक्सीजन अवेलेबल. तो दोनों के बीच में देर इज अ वेरी ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेफिसिट, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डेफिसिट. तो ये जो ऑक्सीजन डेफिसिट है दैट टू क्रिएट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, अब ये तो फुलफिल करना पड़ेगा ना आफ्टर द एंड ऑफ दैट एक्सरसाइज. सो वही ऑक्सीजन डेफिसिट जो है, ठीक है, वही जो ऑक्सीजन डेफिसिट है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन डेट, एंड दैट इज गोइंग टू कंज्यूम ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देयर. ठीक है, अब वो ऑक्सीजन डेट हो क्यों रहा है क्रिएट? फर्स्ट, जो हमने लैक्टेट जनरेट किया बाय द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, यू हैव टू कन्वर्ट इट बैक इनटू पायरुवेट एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ना. तो वो एक कन्वर्ट करने के लिए, टू रिप्लेनिश जो आपने ATP यूज किया या क्रिएटिन फॉस्फेट यूज किया, उसको रिप्लेनिश करने के लिए. ठीक है, एंड जो आपने मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज करवाई, उसको आपको रिप्लेस करना है. सो ऑक्सीजन डेट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट यू कंज्यूम आफ्टर आप यू आर डन एक्सरसाइजिंग. ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन डेट. ठीक है जी. नाउ द लास्ट टॉपिक, स्मूथ मसल सेल. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम योर स्केलेटल मसल्स? पहली बात हमने बात की थी, स्मूथ मसल सेल्स आर बेसिकली नॉन स्ट्राइएटेड. क्या उनमें स्ट्राइशंस हैं? उनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं है, वो सिंपली प्लेन दिखते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो व्हाट डू दे हैव? डू दे हैव टी ट्यूब्यूल्स? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया. टी ट्यूब्यूल्स क्या है? दे वर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जिसे हम कहते थे. दीज वर इन्वेजिनेशन ऑफ द सार्कोलेमा. ठीक है, सो क्या इनके पास ये है? नहीं है. व्हाट डू दे हैव इंस्टेड? दे हैव दीज कैवियोले. कैवियोले आर स्मॉल डिप्रेशन इन द सार्कोलेमा. तो उनके पास टी ट्यूब्यूल्स नहीं है. ठीक है, ये भी हमने देख लिया. सो इंस्टेड ऑफ द जेड लाइन्स दैट वी नॉर्मली हैव, जो हमने जेड डिस्क के बारे में जो हमने पढ़ा था, इन पे जेड डिस्क नहीं है, बट दे हैव समथिंग नोन एज डेंस बॉडीज. ओके, सो वी आर जस्ट इन्यूमरेटिंग क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन अ स्केलेटल मसल एंड अ स्मूथ मसल. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट एक्टिन? हमने ये पढ़ा था 2:1 रेशियो था थिक एंड थिन फिलामेंट्स का. ठीक है, 2:1 रेशियो. इस केस में एक्टिन इज मच मोर देन मायोसिन. तो ये जो रेशियो है दैट इवन गेट्स रीचेस अप टू 10 to 15, मतलब 10 से 15 एक्टिन फॉर 1 मायोसिन. उस केस में इट वाज ओनली 2 एक्टिन फॉर 1 मायोसिन, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट, है ना, कि एक थिक फिलामेंट वाज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन मॉलिक्यूल्स एंड एक एक्टिन वाज सराउंडेड बाय 3 थिक फिलामेंट्स. तो 3:6 रेशियो, दैट इज 1:2. इस केस में हम कह रहे हैं एक्टिन बहुत ज्यादा है, तो 10 to 15 है इसकी रेशियो. एंड ट्रोपोनिन था इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स. यहाँ पे देयर इज नो ट्रोपोनिन.
but in place of troponin we have something known as calmodulin. ठीक है, so that is the differences between them. So this is the structure of a smooth muscle cell. हम कह रहे हैं कैवियोले हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, but it's not that very well developed as compared to a skeletal muscle. ठीक है, सो यहाँ पे वी आर जस्ट सीइंग कि यहाँ पे डेंस बॉडीज हैं, एंड जो सारे के सारे एक्टिन एंड मायोसिन है, दे आर अटैच्ड टू दिस डेंस बॉडीज इंस्टेड ऑफ द जेड डिस्क दैट वी सॉ इन द स्केलेटल मसल. ठीक है, ओके जी. हाँ, वी गोइंग टू सेव दिस, ये सबका सब सेव हो जाएगा. ऑल ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ठीक है, नाउ दो टाइप के हमारे स्मूथ मसल सेल्स हैं. वी हैव सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सेल्स एंड वी हैव योर मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स. मतलब क्या है, सिंगल यूनिट सारे स्मूथ मसल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट. ठीक है, मतलब ये सबके सब आर बेसिकली कनेक्टेड वाया दीज जंक्शंस नोन एज गैप जंक्शंस, जिसके थ्रू ये सारे के सारे स्मूथ मसल सेल्स के जो भी आयंस आ रहे हैं एक में, दैट कैन बी शेयर टू द अदर वन, सो दैट सारे के सारे कैन कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल मसल, दैट इज फंक्शन एज अ सिंगल सिंसीशियम. तो इसे हम सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं. कहाँ प्रेजेंट है? दे प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ द विसरा, लाइक इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया, यूरेटर्स हो गया, सब के सब जो भी स्मूथ मसल्स यहाँ पे हॉलो विसरा में प्रेजेंट है, दे आर योर सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सेल, जो दे आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस. ठीक है, ये जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली दे आर मायोजेनिक, मतलब नर्व सप्लाई सिर्फ मॉड्यूलेट कर सकते हैं इनकी एक्टिविटी, बट दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एट देयर ओन विल, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. दे डोंट नीड एनी न्यूरल इन्फ्लुएंस. जो भी नर्व है वो इसे बता सकता है, मॉड्यूलेट कर सकता है एक्टिविटी, बट इनका मेनली एक्शन, इनका मेन कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड मायोजेनिकली, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. एंड व्हाट अबाउट मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है? दे मेनली प्रेजेंट एट द सीलियरी मसल्स. तो ये जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स है ना, ये इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है, ये डिफरेंट स्मूथ मसल सेल्स हैं, इनके पास कोई गैप जंक्शंस नहीं है. दे गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट सिंगली, एक यूनिट नहीं, मल्टी यूनिट की तरह. ठीक है, थोड़ा सा मिसनॉमर हो सकता है, बट इस केस में जो नर्व फाइबर्स है दैट बेसिकली शोज वेरिकोसिटीज, और ये वेरिकोसिटीज आर गोइंग टू साइनाप्स विद द स्मूथ मसल सेल, और हर स्मूथ मसल सेल इज डिफरेंट. सो इनका कॉन्ट्रैक्शन क्या ये खुद मीडिएट कर सकते हैं? नहीं. सो इनका कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड न्यूरोजेनिकली. ठीक है, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्शन इज ओनली इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेशन ड्यू टू द नर्व्स व्हिच आर सप्लाइंग द मसल एंड नॉट मायोजेनिक. तो सिंगल यूनिट मायोजेनिक एंड मल्टी यूनिट न्यूरोजेनिक. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है, जस्ट एक चीज, एक्शन पोटेंशियल जो हमारे स्मूथ मसल सेल्स में हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के हैं. वी कैन हैव समथिंग नोन एज these we can have slow waves, ये दिख रही है यहाँ पे आपको slow waves, and these slow waves are sometimes interspersed with these spike potentials, or we can have a generation one action potential. तो बस what I'm saying is तीन टाइप के action potentials हो सकते हैं visceral smooth muscle cells में, spike potentials, slow waves and your action potentials. ठीक है, very important is the RMP. RMP हमने already we have discussed पहले इन नर्व मसल फिजियोलॉजी टाइप पार्ट 1 में. -50 से -60 मिलीवोल्ट्स रहता है फॉर योर स्मूथ मसल सेल, थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट देयर कॉन्ट्रैक्शन? नाउ वी आर गोइंग टू हरी अप अब थोड़ा सा. तो स्मूथ मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है तीन तरीके से आप करवा सकते हो. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग, मतलब नर्व फाइबर आया, वो स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन करेंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, और फिर आगे की स्टोरी हम आगे देखते हैं. ठीक है, पहला इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल, नर्व ने स्टिमुलेट किया, डन. सेकेंड इज फार्मेकोमैकेनिकल, मतलब कोई हार्मोन या कोई न्यूरोट्रांसमीटर इज कमिंग एंड दैट इज मीडिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. क्या इसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का रोल लगा? नहीं लगा. किसका रोल लगा? कैल्शियम चैनल्स का रोल लगा, बट दीज आर लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स. ठीक है, एंड थर्ड इज मैकेनिको-मैकेनिकल, विच वी ऑलरेडी स्टडीड वेयर रीनल फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स, मतलब मैकेनिकल स्टिमुलस में वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. तो मैकेनो-मैकेनिकल. तो ये लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. डीपोलराइजेशन हो सकता है, दैट्स गोइंग टू ओपन द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. व्हाट इज दिस कपलिंग नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग. या हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन ओपन लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स, इसे हमने क्या कह दिया? फार्मेको-मैकेनिकल. एंड थर्ड, यहाँ पे हमारा थर्ड है स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ने खुद ही कैल्शियम चैनल्स को स्टिमुलेट कर दिया स्ट्रेच के कारण, उसे हम कहते हैं मैकेनिको-मैकेनिकल कपलिंग. वंस द कैल्शियम इंक्रीज, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? अब देखते हैं. यहाँ पे ट्रोपोनिन नहीं है, पहली बात हमने क्लियर कर दी. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा कैलमोडुलिन प्रेजेंट है. सो कैल्शियम इज गोइंग टू बाइंड टू कैलमोडुलिन. Done. It's going to form a complex known as calcium calmodulin complex. Now this calcium calmodulin complex is going to activate something known as MLCK, myosin light chain kinase. Okay, it's a kinase. myosin की light chain को phosphorylate करना इस प्रोटीन का काम है. नाम में ही लिखा है myosin light chain kinase. It's going to attach phosphate residues to myosin light chains.
ठीक है, इसके कारण क्या होगा, मायोसिन एटीपीएज इज गेटिंग स्टिमुलेटेड एंड नाउ व्हाट डू यू हैव इज एटीपी गेट्स कंबाइंड टू gets broken down into ADP and phosphate. ये वो जो phosphate है मायोसिन से बाइंड कर जाएगा and now the myosin is primed to interact with actin. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है. if we see troponin first, troponin यहाँ पे है नहीं है, so this is how it is mediated. कि myosin light chain kinase is activated by calcium calmodulin complex. This phosphorylates the light chains which are present on myosin. This increases the myosin ATPase activity. Myosin is phosphorylated, ठीक है, light chain kinase के through. And ये जो myosin के phosphorylated light chains हैं, they can interact with your actin and mediate contraction of the smooth muscle, and that can form your cross bridges. ठीक है, so इस केस में calcium calmodulin is mediating the contraction instead of troponin. ठीक है, so let's just discuss properties क्या है smooth muscle contraction की. पहले हमने देखा slow excitation contraction, मतलब जब से action potential generate होएगा and towards generation towards actual contraction of the smooth muscle थोड़ा time लगता है. ठीक है, इससे दो प्रॉपर्टीज हैं. पहला, कम एटीपी रिक्वायरमेंट के कारण भी वी कैन जनरेट सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल हमारी ब्लड वेसल्स हैं, देयर ऑलवेज सम तो टोन होएगी ना, वैस्कुलर टोन जिसे हम कहते हैं. हाउ इज दैट वैस्कुलर टोन मेंटेन? बिकॉज दे आर स्लो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीटिंग है एंड दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एटीपी. तभी दे कैन ऑलवेज मेंटेन दैट अमाउंट ऑफ वैस्कुलर टोन विच इज प्रेजेंट. ठीक है, सो वन थिंग इज दैट. सेकेंड इज योर लैच फिनोमेना. ठीक है, व्हाट इज दिस लैच फिनोमेना? लैच फिनोमेना का मतलब ये है कि whenever smooth muscle cell जो है, whenever it is contracted, it's going to maintain its contraction for a longer amount of time. So this is known as the latch state. एक ऐसी tonic contraction की state जहाँ पे force is maintained for longer amount of time even with low energy expenditure. That is known as the latch phenomena. ठीक है, very important. And nerve muscle junction we have already studied. तो आज का session we're going to close now. ठीक है, so we have covered nerve muscle physiology and we even covered synapses. थोड़ा सा जो पोर्शन जो synapses का रह गया है, we're going to study that in CNS only. ठीक है, so with that almost हमारा nerve muscle physiology is covered. We discussed आज skeletal muscles. ठीक है, mainly हमारा skeletal muscles पे focus था, उनकी properties पे focus था, and we discussed something about their action potentials as well. We discussed about the electromechanical and the different type of coupling reactions which occur in the muscle. ठीक है, and we discussed कि what are the different salient features which are present between skeletal muscle and a smooth muscle. वो हमने different pathway पढ़ा. We even discussed about the cross bridge formation and I showed you that GIF as well कि how does a cross bridge is formed and how does it mediate contraction. And जो main यहाँ पे हमारा जो आज का एक MCQ अगर मैं कहूँ which is the favorite MCQ, बहुत बार repeat होता है, that is about the sarcomere. ठीक है, कि A band, what is during muscle contraction, what happens to the different bands or the different lines, right? कि length of the sarcomere shortens, और the A band जो है उसका जितना भी width है वो उतना ही रहेगा. The H band disappears, ठीक है, जो H zone disappears, ठीक है, the I band shortens. All of these are very favorite MCQ questions. ठीक है, we have already discussed nerve muscle junction, तो वो आज हम नहीं करेंगे discuss. And nerves तो हमने already discuss कर लिया है. Only thing that is left is something about the properties of synapses, पर थोड़ा सा time लग सकता है and I'm going to cover that. For example, आज what I was planning was we can discuss something about long term potentiation, long term depression, है ना, synaptic plasticity के जो different types होते हैं. But I thought that is much more, वो हम तभी पढ़ेंगे जब when we are discussing that relevant topic. For example, cerebellum when we are studying, तो अब हम long term depression पढ़ लेंगे. And whenever we are discussing about learning and memory, then we can study about your long-term potentiation. ठीक है, and जो भी different और synaptic plasticity है, जो भी और synapses का portion है, we are going to study that in CNS only. ठीक है, जो भी थोड़ा सा I'm going to trim it down as well because you already studied synapses quite a bit. Only thing that was left was properties of synapses. वरना तो हमने सारा पढ़ ही लिया था. That was different types of synapses and all. तो आज का session I'm going to close now. Please tell me how do you like this session? Was it okay आज? कुछ छूट तो नहीं गया? Yeah, if you want to ask something, please you can use the live chat and do that. कोई thank you, that is highly appreciated. तो अगर कोई भी issue हो, whether you are facing any problems with the live, please tell that to me as well. We can improve that. I hope ये सारे sessions are of some benefit to you. आज schedule I'm going to upload today,
and uske according we are going to finish all of this up in like on 1 week or so. तो पूरा जो है ठीक है, तो सारा का सारा we are going to finish that in 1 week. Physiology. These sessions are obviously saved for later reference. You can go through them later as well at your own leisure. I understand it's not possible for everyone to attend 10 to 11 wala. We have some job or the other to do. I understand that. But what I'm trying to achieve is कि we just be productive while we are working or while we are at our homes or whatever. ये time जो है it's very crucial for us, especially for internship वाले जो भी people हैं, including us. So I'm going to finish today. Thank you so much. Any questions? हाँ, हिंदी मिक्स तो वी आर गोइंग टू डू दैट. थोड़ा सा आई एम गोइंग टू ट्राई दैट एज वेल. मैं भी बिल्कुल ट्राई करूँगा कि हिंदी मिक्स एंड हिंदी भी इंग्लिश भी हो, सो दैट रेलिवेंट जो टर्म्स हैं देखो वो तो इंग्लिश में ही है. तो बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट थोड़ा सा और बेटर. Thank you so much for attending, and I would take my leave now and see you tomorrow. And with the schedule in hand, I hope we can all prepare beforehand before we attend this lecture, and I just hope these are of some benefit to you. Thank you so much.